स्पीच We'll start from the day of interview. So, I met Chetna. She decided to hire me. That was the first mistake. From there it all started. Then I started becoming a pain in the ass. So, for first 6 months it was a bumpy ride. I was understanding everything and all. उसके बाद आई bumpier ride. Another 6 months. And then it has been a very good journey. Obviously, special thanks to Chetna for always showing a bigger picture to all of us. I think everybody can relate. हम अपने daily tasks में रहते हैं, but अब I think all of us can relate to this fact also कि अब हमें भी पता है कि bigger picture के लिए चले जाना चाहिए. Direct उधर चले जाओ bigger picture के लिए. So that has been there. And apart from that, my first friend Sibo. So, when Sibo joined, we used to sit together. Any, there is a 3 months probation, confirmation. So for that he was sitting with me. So Sibo was my go-to person. कि अब क्या करूँ? इसमें क्या लिखूँ? तो फिर मुझे एकदम पता है ये लोग टीज भी करते थे सिबो को. तो निहारिका की हेल्प करता है ज़्यादा. So Sibo was there to guide me how to manage stakeholders. And that happened. Gaurav was there with me since day one. And then Sakshi and Archita were there. They were like good friends to me. And then Sonali. ये तो बहुत बाद में आया पिक्चर में. हाँ मतलब के टाइम लगा. And then Sonali was there, Shivali was there. मेरी शिवाली का तो बहुत गम किया था. बहुत ही ज़्यादा. She hated me, I hated her. ये सुपर गर्ली टॉक से बात है. मैंने रिक्रूटमेंट किया था ऑनेस्ट टॉक और मैंने रिक्रूटमेंट किया था. ये अगर मैं नहीं बोलूँगी तो फिर तो I am not being authentic. ये सब रहा है. यस So, वो है but the other side of the coin, you missed the first piece. अब तेरी Gaurav said 3 lines together. अभी मैं शिवाली को थी. मेरी और शिवाली की बहुत ही ज़्यादा बम्पियर राइड हुई है. शिवाली didn't like me, I didn't like her. But then the good thing about then again, I think I would mention the culture of the organization. Even if two people are in the same team, they have some sort of disconnects, personal disconnect. But that never came in our work professionally. Neither she brought that up here when it comes to work, and because I was a fresher, so I learned from there. If it is not coming in my workplace, I should also not bring it up that way. And then I think last 6 months, Sonali and I had been in very good connect. We had deep conversations. Chandramani has always been a support system to me, biggest support system to me. With respect to every joining. So is Yogesh ji. Also secret Santa gifts. हाँ, secret Santa gifts. सब उन्हीं ने hide करे थे. और इसने देख लिए थे. बोला इसने हमें बहुत blackmail किया. तो एक दिन मैंने किया है blackmail. एक पूरे दिन. So it has been a very good journey for me, and obviously Chetna was there to guide me at every step. The most important thing that I'll take away from here is the empowerment that Chetna has inculcated in all of us, I think. And empowerment. Being a female, you need to be empowered. कभी कभी होता है कि ठीक है गलती हो गई, मैं गई एक मिस्टेक लेगा Chetna के पास, Chetna externally ऐसे कुछ. Why are you feeling guilty in the first place? तो काम करो तो guilty क्यों? तो वहाँ से I was like कि this is तो something else. This is empowerment. So that has been there, that constant trust that you had in us कि हम लोग कर लेंगे. और I always say कि आपको पता होता है शायद कि हम नहीं कर पा रहे हैं, but you always say कि कर लोगे. I think that has been a very good journey for me. I learned authenticity, integrity here, and I also feel my foundation is very strong now. Transparency, being authentic about your work, true about your work, and I think it is very important to be emotionally connected with your work. If you are not emotionally connected with anybody, then
you can't win that thing, or maybe a person, be it in personal life or professional life. So I think it has been a very enriching journey for me, and the only reason that I'm changing for it is to learn some other organization psychology. Jay asked me, why? So I was like, I don't have the answer to why not GB. मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वेरी गुड टू मी, एवरीबडी हैज बीन वेरी गुड टू मी पर्सनली. कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डिस्कनेक्ट्स होते हैं, बट दैट नेवर केम अप इन वर्क. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हियर. एंड या नाउ एनी फीडबैक्स? You forgot your Mukku. Your first assistant. Yes. So I think when I started working with Mukku, he had set my expectations very high, because the type of questions he was asking and the type of interest that he showed, and he always says that I created that interest, but I was like नहीं, इतना फायर फाइटिंग मुझे करके छोड़ना पड़ेगा कि तुम्हें इंटरेस्ट रहे, तुम एंगेज रहो. So that was also a very good experience for me कि how I'm going to handle my team if I go forward, and if I have a team, how I have to handle a team. There came a point where I introspected myself. I had a word with Chetna about this. Chetna मुझे ऐसा लग रहा है. तो चेतना ने मुझे थोड़ी सी फिर से बिगर पिक्चर दिखाई. Then after a week I came back to her. चेतना ये सॉल्व हो गया. I think I was overthinking. So मुझे मेरी expectations बहुत high set करी हैं. अब if I grow and if I ever have a team, I would expect that person to be like me. So you set my expectations very high. If a junior has to be there, yes, the person has to be like me. chew your brain. Yes. मुझे पता कैसे चलेगा काम कर रहे. That's the same thing that Niharika does. She was able to मतलब वो और जैसे हो जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये दूसरों के साथ करती है सेम चीज, मुक्कू ने इसके साथ कर दी. निहारिका को आने से पहले 10 बार तुम्हें सोचना पड़ता है निहारिका को मीटिंग में जाना है. मैंने क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन कितने कि उस टाइम पे बोलेंगे अच्छा तू रुक जा 2 मिनट, मैं कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, रुक जा. लेकिन मैं बाद में फिर इनको से ग्रिल करती थी. अब ये बताओ, फिर वो फाइल कहाँ स्टोर करते हो सोनाली? उससे क्या होगा? अच्छा कौन देखेगा इसको, क्या करोगे इसके बाद? मैं कहा अरे भाई इतना तो मैंने भी नहीं सोचा जितना इसने सोच लिया मेरी एक फाइल के बारे में. This was a very good thing. मतलब कि even if we were sorry मैं start नहीं, आप फीडबैक्स के लिए ओपन है. तो बोल दिया था जब कोई मीटिंग होती थी, even if it is not, टीए बिल्कुल अलग से काम करता था and they used to work directly with you. बाकी टीम के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता था. एक स्टेज के बाद तो टीए फंक्शन व्यू अप इनटू अ वेरी, जैसे वो हर कंपनी के फाउंडेशन लेवल होता है, वो ट्रांजिशन आ गया था. तो बाकी दिखाते थे हम, शुरू तो फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन कि क्यों किया, कि किस लिए कर रहे हो, अच्छा ये तो ऐसे भी कर सकते हो. बस हमेशा कुछ ना कुछ होता था, फालतू वाला नहीं होएगा. डायरेक्ट मतलब वो वैलिड क्वेश्चन होते which we are going to miss. शांति हो जाएगी का और ये टाइप राइटर मेरे साइड में बैठता था ना, भाई राम शिवाली नो, मैं अग्रेशन में मेल्स लिखती हूँ, या तो मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ तो लिख रही हूँ, तो भी मैं तेज लिख रही हूँ, या मैं अग्रेसिव मेल्स लिख रही हूँ पूरे टाइम ऐसे ही तो मुझे इसको बोलना पड़ता था मुझे यार दिमाग में and लगा मेरा. sorry to break you, and other thing that I've learned here is it is very important to be a good and kind human. Empathy has to be there. So exceptions are always there. So I think empathy is something that I learned here. It was not there. बिल्कुल भी नहीं थे. I was a very cold-hearted person. I still am. It exists, but professionally I feel like कि empathy has to be there. कुछ भी हो रहा है, we don't know what the person is going through, back of the mind में क्या चल रहा है, किससे लड़ाई करके आया है, क्या निकाल रहे हैं. So I think empathy is very important. So वो मैंने यहाँ पर लर्न करी, यहाँ के कल्चर से लर्न करी, and I think every individual is equally empathetic in the organization, especially the leadership position people. So that is something I'll take it forward. And our core competencies also. These are the set of first core competencies I have. Now I'm ready to build. More setup. अब हो गया क्या? अब यार मतलब अब मत वापस मिलना. अब हो गए क्या? Seriously? नमन की कसर फिर कोई पूरी करेगा, पीछे से डालना पड़ेगा बेचारा. ना बोला ना कि केक खाना है. इसमें प्रिपरेशन भी करी हुई है पूरी. गाना कौन सा गाना है
बाबुल की दुआ है या वही तो मैं बात कर रहा था, बात आ जाता फिर मैं कहा चलो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। सो आई थिंक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एंड आई मेट द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल हियर मुझे इससे पहले नहीं पता था दिस टाइप ऑफ यूनिक पीपल एग्जिस्ट यूनिक तुम सबको सब में यही सोचती थी कि मैं ही सबसे यूनिक हूँ। नहीं मुझे ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि अच्छाई इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है ऑनेस्टली मुझे लगा था पीपल विल ऑलवेज टेक यू नेगेटिवली बट बिकॉज यू ऑलवेज से कि यू ऑलवेज बिलीव इन द पर्सन ये मैंने लास्ट 6 मंथ से प्रैक्टिस करना शुरू किया कि ऑलवेज बिलीव इन द पर्सन तो वो मुझे बिल्कुल नहीं था मुझे लगा था इफ आई एम इन अ रूम आई एम ऑलवेज टेकन नेगेटिवली इट इज़ माय ड्यूटी टू मेक द अदर पर्सन नो दैट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव तो अभी मैंने उसका उल्टा अप्लाई करना शुरू करा है कि नहीं अच्छा भी ले सकते हैं नहीं नहीं वो पहले रख के डालूंगा स्टॉक सो या देखो फ्रेंड नंबर 1 फ्रेंड नंबर 2 दिया सिर्फ मैंने इतना तंग करा है ना इतना तंग करा है मैंने सिर्फ वो लास्ट 6 मंथ में तो बहुत तंग करा है सिर्फ एफएनएस से वो निहारिका जो थी जब स्टार्टिंग में थी और जो अभी है जिसको लास्ट टाइम भी 1-2 बार बोला था वो पूरी डिफरेंट इंडिविजुअल बन चुकी है वो बोलने का तरीका कैसे चीज़ों को देखते हैं ग्रिलिंग एंड एक्चुअली जो जो चेंजेस में आए हैं लास्ट 1 ईयर में एक्चुअली वेरी गुड वेरी प्राउड ऑफ यू I am also very proud of every individual because we all are growing, right? या एवरी डे गौरव को तो इतना बुरा लगा कि गौरव ने बोला मैं भी जाता हूँ। दोस्त नहीं तो मैं भी नहीं बहुत ज्यादा नहीं गौरव स्टिल थिंकिंग इतना बड़ा स्पेस बना क्लास में ये देख ले ऐसे होता है तो ऐसे बैठ जाएंगे हम सब आई मेल एवरीवन कुछ नहीं गौरव was my friend but Sibo was my boss First time. गौरव was always there ऐसा इसको तो मैंने गौरव को मैंने जितना रैंक करा है उतना रैंक मैंने किसी को नहीं करा वो वही सोचता इसको होगा मैंने ना बहुत हाँ यही सुनता था तो मैंने इसको इतना डंप करा है सारे इन्फॉर्मेशन का मैंने ये इसने ये फिर इसने ये अब मेरे को कुछ नहीं समझ आया मैं क्या करूँ तो गौरव बोल रहा है इसीलिए आई कैन निहारिका नॉट बीइंग देयर आई कैन नॉट इमेजिन माय लाइफ तो या चलो एनिमी नंबर 1 एनिमी तो मैंने वो तो एनिमी होगी गौरव सबकी एनिमी होगी स्पीच तो So, directly though, मतलब I interacted last 6-7 months with you, but initially when my interaction, सबसे पहले मेरा interaction था तुम्हारे साथ, and so the feedback that I gave regarding you to Sakshi कि recruitment के लिए perfect है. उसके बाद हमारा मतलब इतना interaction हुआ नहीं and that was a journey जब मुझे ऐसा feel हुआ था कि I spoke to Sakshi and that's it तुम्हें perfect. Because then after we hired you and I have seen you tremendously growing. Apart from that also जब रात को मैं इसको देखती थी ना चेतना 10 बजे मतलब 8-9 मतलब जब हम जा रहे हैं और 8-7:30 बजे तक बैठ के पढ़े सेम थिंग आई डिड व्हेन आई वाज इन माय इनिशियल डेज क्योंकि रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी 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 टफ जॉब नॉट एट ऑल बिकॉज एक प्रेशर हमेशा रहता है माइंड में कि ये पोजीशन हमको इस टाइम में क्लोज करनी है दो टारगेट नहीं है स्टिल आ जाओ निहारिका is forever Yeah, now I figured. Very discreet. no that's not discreet she has been working till the last day that's why Tab- nobody's figured Very out discreet. सो टारगेट में मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती बट स्टिल आई फेल्ट एक माइंड में प्रेशर रहता है एंड वो जो तुम्हारे फेसेस मतलब मैंने आई ऑब्जर्व यू वेरी क्लोजली दो वो ये कि बात उतना नहीं है तो लेकिन वो चीज़ें मतलब फील कर सकती हूँ बिकॉज वो सिमिलर बिल्कुल सिमिलर था कि तुम बैठी हो तुम परेशान हो पोजिशंस क्लोज नहीं हो रही हैं और वो मैंने अपने साथ आई हैव सीन दिस जर्नी वेरी क्लोजली बट फिर उसके बाद जब क्लोजर्स होने स्टार्ट होते हैं तो वो भी एक अचीवमेंट होता है दैट आई सी सो आई फील यू एज फार एज वर्क कंसर्न उसमें तो कोई मतलब जवाब नहीं है Recruitment तो मेरा तो हमेशा से फाइनेंस टीम को बुला दो कि निहारिका कंप्लीट फाइनेंस टीम तो इसने बनाई थी भाग भाग के
Okay, Also, when I was thinking of all this transition, I started thinking 6 months back. But then I took a pause. कि जब तक मेरा finance का piece मैं close नहीं कर देती, I will not think about it. That was the personal obligation that I had on myself. That until unless I cleared this, I said this, I'll not think about this. Because if I would have taken that step at that point of time and left that in the middle, I would have done or maybe I would have shown a cowardly behavior. He something he was she was not able to close it. That is why she couldn't. That's why she chose it. Because it was a No, I journey of think- 6 months. I think it mattered more to you than what everybody else would have Yes, said. it It does. is more. So I was like- saying this only that I am emotionally connected with my work. Just like you connect emotionally in relationships with your family, it is important to connect emotionally with your work. Then only you will be able to take a stand for them, for whatever work you're doing. So I feel it strongly. It's very important to connect emotionally with your work. और तेरी बारी है. तेरी बारी है. गौरव मेरी क्या? है। गौरव- गौरव is मेरी है। Best friend. Yeah, he's my best buddy. Best buddy. work wife, work husband. Work husband. हाँ, work husband. प्रोफाइल नहीं रहता ना. केक काटना होता है सुबह वॉशरूम से हाथ धो के आ हाथ धोकर आना. सिद्धू ने ऐसे कहा कि तुम चेंज हुए हो, मुझे कुछ चेंज नहीं तो बस ऐसे ही रहो, सब सही है। ऐसे ही रहो. सबसे मुक्कू ने मुझसे थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा व्हाट क्वालिटीज डू यू सी इन योर हस्बैंड. मैंने कहा इंटरव्यू लेवल 1 पर रिजेक्ट हो जाते हैं. घर वाले स्क्रीनिंग करके भेजते हैं बट यहाँ से कुछ हो जाती है. फर्स्ट राउंड में क्लोज हो जाता है. फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं कर पाते. वो आ गए इसके ड्राइवर आ गए। रॉबिन मैं आपकी तारीफ कर चुकी हूँ. आप कहिए अब आपकी बारी है. वीडियो तो आएगा ना मेरे पास। तो हाँ तुमने रॉबिन की कब की छूट? वो तो खाली तब. ओ मैं जब से केक आया तब से होगा। केक से मैंने कर चुकी हूँ. हाँ. मौसम में जाएगी। निहारिका है ना? नेक्स्ट वन। Next, देखो फ्रेंड नंबर 1 हो गया, फ्रेंड नंबर 1, बडी नंबर 1, द बॉस नंबर 1. बॉस मॉम नंबर 1. Boss mom number 1. So Niharika, I remember, and I generally remember everybody's first interview. I have this problem. Okay, so This I problem. I remember everybody. Head of department. Yeah, I remember not everybody's. मतलब I remember even Naman's first interview. Yeah, where he was sitting also. I have told him graphic description. ये कहाँ बैठ के कोविड के बीच में था ना, घर पे था वो. आई नो पूछा भी था तो कहाँ बैठा है? अरे कौन सा कोना था जहाँ बैठ के तुमने? My room was like छोटा सा corner room and I was sitting in the corner. ज़रा थोड़ा कहाँ हाँ, मैंने बैठा? मतलब कहाँ बैठ के interview दे रहे थे? टेबल के नीचे. So I remember the interview, the first time I met Niharika, and I was interviewing her, and I said कि you come in for an internship. मैं बोले इसका क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Because she had done a graduation, then she had done a law, बार भी पास किया और उसके बाद बनना है recruiter. तो पहले तुम 3 महीने करो, 3 महीने देखो पहले, ये तुमको समझ में आता है क्या? नहीं समझ में आता तो it's okay. 6 months. 6 months. I said 6 months. तो निहारिका ने बोला नहीं, only 3 months, क्योंकि 3 months में मुझे और आपको समझ में नहीं आता है ना, तो इससे अच्छा कि मैं चले ही जाऊँ. 6 months is a 180 days period. So then I said कि हाँ ठीक है चलो 3 months okay. So I liked the confidence. उसके बाद निहारिका came and obviously it was the first thing that you are learning, right? So she went, मतलब पूरा she rocked and rolled, she cried and there were more tears than anyone else in this team. But I think that also that determination कि मुझे तो ये crack करना ही है. That was very very strong, and the kind of ownership that I have seen in Niharika for her work, it is very rare, and that is actually going to be the baseline for her growth, which she's grown here also, and she will always grow because of that. Her work is the most important thing to her, right? ये अपने पैर की उंगली भी तोड़ा के टूटी हुई उंगली के साथ आई थी. So उसके पैर, ये जो उंगली है ना, ये ऐसे थी 90 degrees it was. 90 degrees. We had to send her back home. But she said, नहीं ठीक हूँ मैं, काम करना है मुझे. Actually the finger was like this.
and then she got a plaster and all of that. But she had come to office from Faridabad, right? So I mean, like the kind of ownership, the kind of madness towards and you know delivery. Matlab, I had to at one point of time sit her down and say, I have never told you about that. Okay, because for her I had to change my answer. That nahi. It is what are we hiring? It's very important, and each and every person, and that's how everybody has actually got selected. So, and she would just like a sponge. She picks up from everybody. She picks up, grows, and I think that's the most beautiful thing about her. And I wish her everything when she goes ahead. शादी के लोगों को कोई इंटरव्यू लेवल 1 क्लियर कर देगा। लाइट तो जला दो। वो डाल के वो हमने सबसे पहले आ जाओ आ जाओ सब। हाँ चलो The bar is open. पहले काट फिर लगाना पहले बार पहले मैं स्केट कर Enemy number 1. दो है।